the crystal field theory. Okay, now the main postulates says that electrostatic interaction is there between the metal ion and the ligands. Okay, purely electrostatic interaction is there. Now what is the influence of the ligand? Ligands are considered either point charges or dipoles. ठीक है, point charges in case of anion and cations and dipoles in case of neutral molecules to surround a central metal ion. Now d orbital splitting. What do you mean by d orbital splitting? In an isolated metal atom, the 5d orbitals are degenerate, that is have same energy. Okay, but when the ligands approach, they separate in T2G and EG orbitals. Okay, T2G are the triply degenerate orbitals, that is dxy, dyz and dzx or xz orbitals. ठीक है, इसमें देख लिए, these are triply degenerate, that is they all have same energy. ठीक है, these d orbitals, all 3 d orbitals have same energy. And Eg are the doubly degenerate orbitals, that is dx square minus y square and dz square. They are doubly degenerate and have same energy. Okay, now why dxy, dyz and dzx all have same energy? Because the lobes lie in between the axes, है ना. In all these cases, lobes are lying in between the axes, while in case of dx square minus y square and dz square orbitals, lobes are lying along the axis. ठीक है, तो इस वजह से ये डबली डिजेनरेट हो जाते हैं, वो ट्रिपली डिजेनरेट हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? Crystal field splitting is the energy difference between the two sets of d orbitals in a transition metal atom after its interaction with the ligand. Okay, surrounding ligand. Now surrounding ligand cause the d orbitals to split up in T2G and EG orbitals. Okay. Now see beta, example of tetrahedral complexes. There are two types of complexes mainly, na, tetrahedral and octahedral. Example of tetrahedral complex is this COCl4 2 minus and its IUPAC name is tetrachloridocobaltate 2 ion. Okay, now its geometry or shape is this, like this. ठीक है, this is tetrahedron. Okay, now you can clearly see that the chloride ligands are approaching the metal between the axes. ठीक है, तो कौन से d orbitals की बेटा एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. ओके, that is the electrons of the metal ion as well as the electrons of the ligand. तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी बेटा? You already know that dxy, dyz and dzx orbitals lie between the axis. Okay, lie between the axis, तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. यहाँ पे T2 orbital or the triply degenerate orbitals dxy, dyz and dxz will be at higher energy. Okay, and Eg or E orbitals, that is dx square minus y square and dz square that lie along the axis will be at lower energy in case of tetrahedral complexes. Okay, now see octahedral example of octahedral complex is this. You can name it ना, क्या नाम है हो जाएगा बेटा? hexaamine copper 2 sulfate. Okay, now this is the geometry of octahedral complex. It is octahedral, geometry is octahedral. ऐसे बनाया जाता है बेटा. You can clearly see that the ligands are approaching along the axis. Ligands are approaching along the axis, not in between the axis. तो जब along the axis approach कर रहे हैं तो doubly degenerate orbitals की एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है, doubly degenerate orbitals or the d orbitals that lie along the axis are dx square minus y square and dz square orbitals. Okay, so Eg orbital will be at higher energy and T2G, that is triply degenerate orbitals that lie between the axes dxy, dyz and dxz will be at lower energy. ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम भी अभी हम बनाएंगे. ओके, नाउ बेटा सी दिस इज द डायग्राम. ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ओके, नाउ splitting of orbitals in tetrahedral complexes. In tetrahedral complexes, the d orbitals split into higher energy T2 set. Okay, 3 orbitals, that is dxy, dyz and dzx, and a lower energy E set, that is dx square minus y square and dz square. Now this splitting is weaker than in octahedral complexes. Why? Because there are a fewer ligands. In case of tetrahedral, number of ligands is 4, while in case of octahedral, number of ligands is 6. Okay, and the ligands are located between the axes. ठीक है, causing the T2 orbitals to be higher in energy and the overall splitting energy to be smaller. Okay, splitting energy is delta T. This is delta T is the splitting energy. Okay, now this is the Beery center. This is termed as Beery center, this dotted line.
ठीक, बेयरी सेंटर से 3/5 डेल्टा टी इज दिस, यानी लेसर इन एनर्जी इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, डेट इज ई सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड बेयरी सेंटर पे जो एनर्जी है उससे 2/5 डेल्टा टी हायर एनर्जी या 2/5 डेल्टा टी हायर एनर्जी कौन है, T2 ऑर्बिटल्स, डेट इज ट्रिपली डिजेनरेट dxy dyz एंड dzx। ठीक है, that means the orbitals that lie between the axes, why ligands are approaching between the axes na, in case of tetrahedral complexes. Hence these orbitals are at higher energy while the orbitals that lie along the axis, that is these two E set of orbitals, are at lower energy. Okay, now see beta, this is splitting of d orbitals in case of octahedral crystal field. Okay, in case of octahedral complexes, now when 6 ligands are approaching the metal ion, ठीक है, तो फिर क्या हो जाता है बेटा, 6 ligands अप्रोच कर रहे हैं तो 6 ligands electrostatic repulsion causes the metal ions degenerate 5d orbitals to split into two sets, that is a lower energy T2g set and a higher energy EG set, है ना. Now why this energy difference? Why? You already know that the ligands are approaching along the axis. And along the axis which two d orbitals lie, dx square minus y square and dz square. Hence due to electron repulsion between the ligand's electron and the metal ions electron causes the Eg orbitals to be at higher energy, that is dx square minus y square and dz square orbitals that lie along the axis, and the T2g set of orbitals, that is dxy dyz and dxz that lie between the axis to be at lower energy. So बेयरी सेंटर से ये बेटा प्लस 3/5 डेल्टा ओ है, ठीक है. ओके, दिस इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक, नाउ बेयरी सेंटर से ईजी ऑर्बिटल्स कितनी कम एनर्जी पे हैं, -2/5 डेल्टा ओ. ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ओके. नाउ बेटा व्हाट आर लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द सीरीज इन विच ligands आर अरेंज्ड in order of increasing field strength. Okay, the ones having least field strength are placed at the extreme side. Okay, it is an experimentally determined series based on the absorption of light by complexes with different ligands. So here you can obviously see that carbonyl CO is the strongest ligand, then cyanide, then ethylene, diamine, ammonia, EDTA, थायोसियानेट, वाटर से बेटा वाटर पे बॉर्डर लाइन आ जाता है. वाटर से अक्वा के बाद सारे बेटा कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड हैं. NCS तक क्या है, NCS माइनस तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं. एंड वाटर ऑनवर्ड सारे कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं. ओके, सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स, और ये कौन से हैं, फ्रॉम कार्बोनिल टू NCS माइनस. ठीक है, नाउ बेटा अप टू D3 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू द अबाव प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, है ना. आफ्टर द स्प्लिटिंग for D4 ions, two possible patterns of electron distribution arise, यानी from D4 ion और fourth electron onwards. तो fourth electron या तो T2g में जाएगा या क्या करेगा बेटा, पेयर विद एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट कुड अवॉइड पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द EG लेवल. ठीक, अब ये कब होगा, जब वीक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी लिगेंड्स कैसे होंगे, वीक फील्ड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे. ठीक है, तो इन केस ऑफ वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनपेयर्ड. ठीक, तो फिर कैसा आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. अब इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2. ठीक है, फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स. अब देखो, दीज पॉसिबिलिटीज डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ एंड द पेयरिंग एनर्जी. पेयरिंग एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल. ठीक, द टू ऑप्शंस आर गिवन बिलो. इफ डेल्टा ओ, that is the crystal field splitting, is less than pairing energy, it will be a high spin complex, as in case of weak field ligands. If delta O is greater than pairing energy, it will be a low spin complex, as in case of strong field ligands. Strong field ligands form low spin complexes, means inner orbital complexes. D2 sp3 will be the hybridization.